completely make it available on the patient side. Sir, I think you are the right person to talk on this. Can we have people who are going out? This is a very important session. People who have gone out, we request the members over here who are helping us, kindly request people who have gone outside to come up because this is a very, very important session. So I would request everybody to please be seated. After this, we will have a tea break, but till then, hold your seats. सबसे निवेदन है कृपया जो अभी बाहर गए हैं उनको रिक्वेस्ट कीजिए आए and have a seat here. So I would request my co-host Murlikrishnan sir to talk on instrument inventory system and also to introduce Surgitrace. Can we have lecture on that? Thank you. Hello, hello, hello. Is it audible to the last line? Can we have the presentation, please? Till the slide comes, I will just talk about an introduction. I just told Mukta a little before, like to identify a person from the group. When I called by the name, it is next to impossible, she was telling. But it should be possible at time. And as like we do the job in our CSST, when a surgeon asks for a particular instrument during a surgery, and every single second counts till it comes to the patient side, because that much waiting is a risk to a surgeon when he does a surgery. So very, very important as far as the inventory of instrumentation is concerned. And before I come to the inventory part, I will tell about the importance of surgical instruments in a hospital. It's an asset. So this a small representation of my career here. I think almost all of you are aware and quite familiar. So those who are not familiar, I was having 38 years in the field of CSST experience. And now sir is telling, don't say retired. I am not telling I am retired. I am open for any, any type of activities which is related to my 38. My long lifetime I have spent for this field. And whatever lifetime left for me, I am more than happy to do it, sir. Not an issue at all. And another thing, a clarification, I will tell you, Madam Nandini Krishnamurthy is seated here. She directed me, she was my boss for 9 years in my initial career of Hinduja Hospital. And she taught me to be polite and firm. Am I right, madam? And especially to me, because I'm too polite. In front of the nurses, when I get scared immediately in those days, when some complaint comes, she is telling, your polite nature I like very much, but you cannot be polite in front of the matters where you are not at fault, and you have to be firm. So this is what I have transferred to Mukta also, and she told me it's not her fault as well. So that is the mantra of CSST basically. We have to be polite. We are at a service department, and we have to continue doing service to the best of the patient community. Sir, coming back to instrument inventory system, go to the next slide, please. So as such, that surgical instruments are very, very important in a hospital like any other, or more than that I should say, because a person is identified because of the tools in hand. Take the example of a carpenter. A carpenter may be well known in an area as a good carpenter. A raw wood is given to him. In his mind, there will be certain art which is hidden, which he transfers into an excellent art. An excellent art he will produce, which will be kept in a showcase with pride. So, similarly, a goldsmith. The raw metal gold will be coming. It is not looking very good, but the goldsmith converts into a beautiful jewelry which adorns the jewelry shop, and many people run behind of it to own it.
So like that, any matter in this world, if you are looking, that converts into an admirable one only because of something called tools. And tools are in different forms. And our surgeons are also no difference to it. Surgeons' tools are nothing but surgical instruments. And surgical instruments, if it is not available at the right number and right quality and right working condition at the right time, if it is not available, the surgeon remains a big zero in front of the patient community. Am I right? People are entering to a hospital is not because of the hospital structure, the hospital look, or anything like that, but because of a particular surgeon. I know one hospital, I'm not taking the name here, it's not so good show of hospital, but there is a heavy flow of patients over there. Administration is very poor, but patients are still waiting long time, bothering all the unfamiliar situations over there, only because the clinical excellence of that hospital. The surgeons are of good, but those surgeons can perform excellent surgery if the tools, that is called surgical instruments, are readily available at the right number and at the right quality. So that's what I am going to emphasize here. To preserve the quality of surgical instruments is very, very important. So this is my topic today, that guide to surgical instrument management. How can we preserve the surgical instrumentation? How can we have the documentation of the movement of surgical instruments from one area to other and to the end user? And here my agenda for today is that how we will track the instrument system, the evolution, like you may be remembering the picture of biology book when we were in school, that how monkey became a man. So like that, different stages of evolution had happened during the process, and even instruments management also, even the inventory management also, and even the tracking management also have got different tracking system, right from the pen and paper systems, then the batch labeling systems, then the electronic tracking systems, all I will explain in the coming slides. And then a benchmark for using this system is Surgitrace. So the team is already here, so they will be able to explain it in a better condition, but I will also explain the short span of time I was provided about how to utilize the maximum resources within the specified time and how we can trace without any hassles, and also the sterilization, that workflow in CSSD, how it is catching, etc. So all this I will explain in the coming slides. So as far as the evolution introduction are concerned, it is directly related to the performance of our sterilization department in the last 100 years. There is an evolution happened in CSSD also. Right from, you all know that when you are looking back into 100 years, how it is started from boiling water to the discovery of sterilizers at different categories, right from that, what is that called, that vertical type of sterilizer, which you will able to see our initial books, and then the horizontal sterilizer came with gravity displacement, then slowly it turned into high pressure, high vacuum sterilizer, and now the latest, PLC controlled and remote controlled sterilizers, and even we can see the process, what is happening from sitting at home and able to document it by means of different electronic process. So similarly, the tracking system are also nothing different, and that also are correlated with this which is happened. So what is an instrument tracking system is, under law, everything has to be documented. If it is not documented, it's as good as not done. If a patient enters to a hospital post-discharge and coming that I got SSI,
I have the evidence. I got the report in hand telling that I got infected post-surgery. Then, if you are going to Western countries, there is a law which is governing that every single process need to be analyzed, right from the patient admission till discharge, what went wrong with the patient. And the process happened in CSST is not acceptable. Not exceptional. That also will be put under scanner. How the patient has entered from through different areas, and similarly the materials used on the patient, like the surgical instruments, how it is processed. From the previous patient surgery till the patient is wheeled out of the operation theater, and also in the ICU wards, etc. So all these things will be scanned. Can a CSST able to visualize, can able to show, able to show to them, present to them, what are the evidences that we have undergone and we have done, we have the records in hand, and it is in compliance. So that there the importance of the tracking system comes. So the evolution, as I was talking earlier, the evolution has been started right from the pen and paper, and then came pen and paper is like even today also happening in many places. When the instrument is going out of the operation theater, writing everything in the pen with the paper and pen, and then while receiving, all the documentation comes maybe in a register book, maybe in a piece of paper, maybe in a form which has been submitted, and this form may float around. That is the problem of it, and then it goes to different areas. Yeah. Okay. So sir is telling to speak little bit in Hindi also. So which में मैं हिंदी में भी English में बात करूँगा, so that आपको समझ जाएंगे. But please, sir, sorry with me, I am not much fluent in Hindi. तो हम बीच में हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोल सकते हैं, मिक्स में. Okay. So मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये शुरू में अभी हमारा ऐसा एक सिस्टम था, जो इंस्ट्रूमेंट्स ओटी से बाहर निकलते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा पेपर में एंट्री करके दे देते था. बराबर बहुत सारे हॉस्पिटल में आज की तारीख में भी हो रहे ये काम. सो जब भी होते हैं CSST वाला रिसीव कर रहे हैं, वो रजिस्टर में एंट्री होते हैं या सादा पेपर में एंट्री होते हैं, जो A4 से इस पेपर में, वो उसको फाइल करके रखते हैं, वो फाइल को जमा करते हैं, भर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और बाद में उसको किसी बंदा को बोलते हैं आप आपके गोडाउन में रखो. उसको ऊपर कभी लेबल चिपकाते हैं, कभी वो भी भूल जाते हैं, और कभी ये याद आते हैं अक्रेडिटेशन का टाइम है. अक्रेडिटेशन हॉस्पिटल NABH के लिए जा रहे हैं, JCI के लिए जा रहे हैं, तो सारे के सारे उठा के पूरा डस्टिंग करके उसको अलग अलग करके इकट्ठा करते हैं, कोई स्कैन करते हैं, वगैरह वगैरह होते रहता है. तो ये इसमें हम आपको पता है ये सिस्टम इतना सही नहीं था. इसमें और टाइम में खाली रिलीफ के लिए, मतलब मेरा काम मैं किया है, कोई पूछेगा तो तुरंत दिखाने के लिए है कुछ मेरे पास, वो है. और उसके बाद कोली सर गया, हाँ है, उसने मुझे सिखाया था, कह रहे ये सिस्टम, ये लेबलिंग गन. आई वाज वर्किंग विद अंबानी हॉस्पिटल, तो सर ने एक बार आके मेरे को ये सिस्टम बता दिया, बहुत बढ़िया लगा था सर. और ये चिपकाने से दैट वाज गोइंग टू 2007 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. और ये इसमें 3 लाइन्स आते हैं, बैच नंबर होते हैं, और उसके साथ डेट ऑफ पैकिंग आते हैं, और एक्सपायरी डेट आते हैं. वैसा वाला 3 लाइन लेबल आजकल तो क्वाइट कॉमन हो गया, ऑलमोस्ट ऑल हॉस्पिटल्स यूज कर रहे हैं आजकल. तो वो 3 लाइन लेबल लगाने का, और लेकिन उसके साथ भी बाकी का भी आ जाता है. वो मतलब पेन से हम बैच सब लिखना पड़ता है, सारे के सारे जितना भी मटेरियल्स गया है, लेकिन इससे थोड़ा सा रिलीफ होते हैं. वो मैं उसका प्लस एंड माइनस बता सकते हैं. ये पेन में पेपर में क्या होता था कि ये एकदम चीप है, इट्स इजीली अवेलेबल. वो पेपर तो मतलब आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक जमा करके एक A4 सेट का बंडल रखेगा, या आपके रजिस्टर रखेगा, या आपके फॉर्म का बंडल रखेगा, तो उसमें खाली लिखने का होता है. और मार्जिनली बेटर देन नथिंग, कुछ भी नहीं है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग बोलते हैं ना, वैसा कुछ तो है उसमें. लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं,
पहले तो अपने CSST टेक्नीशियंस जैसे लिखते हैं, डॉक्टर से भी बढ़िया लिखते हैं ना कभी कभी तो समझ में भी नहीं आता क्या लिखा है, ट्रैकेस्टोमी लिखा है क्या, दूसरा कोई सेट का नाम लिखा है, लैमिनेक्टोमी लिखा है क्या, उसके साथ दूसरा कोई टोमी लिखा है, वो पता नहीं। तो कैसे तो कुछ तो लिखा है, स्क्रू ड्राइवर 3.5 लिखा है तो 3 होके 2 हो जाते हैं वगैरह सब हो जाते हैं, तो बराबर समझ में नहीं आते हैं। और दूसरा है इश्यू तो एलिजिबल का इश्यू हो जाते था, और दूसरा है ट्रैकिंग ऑफ द स्टरलाइजर, पास स्टरलाइजर नॉट ट्रैकिंग टू द परफेक्ट, मतलब वो स्टरलाइजर में जो साइकिल गया है उसमें मैनुअल एरर हो सकता है, दूसरा कोई स्टरलाइजर का एंट्री आ गया, या स्टोरेज आइटम्स, ये फॉर्म्स, ये I can read this better. Forms need to be kept in the right place is the problem. And recall होते हैं, तो recall होते हैं तो हमारे साथ अपने रिकॉर्ड नहीं रहते हैं, और ये मैनुअल स्टोरिंग फैसिलिटी होते हैं, वो भी मैं पहले जैसे बोला था वैसा वो स्टोर करने को जगह नहीं होते हैं। एंड रिपोर्टिंग नीड्स टू बी मैन्युअली, मतलब वो साइन वाइन सब करना पड़ता है, कभी साइन ये सब ऑडिट करने का जाने का टाइम मुझे एक्सपीरियंस भी हो चुका है, ताकि वो किसी को ऊपर साइन नहीं है तो उनको दिखाना पड़ता है, तभी उसको याद आता है अरे साइन नहीं हुआ है क्या, टेक्नीशियन साइन नहीं हुआ या मैनेजर साइन नहीं किया, ऐसा सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसमें जो बोला इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है जो लेबल एंड गन सिस्टम में, तो वो पॉजिटिव, सम ऑफ द पॉजिटिव्स ऑफ दिस सिस्टम करके लिखा है, वो देखो, वो कॉस्ट लेस देन इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग, मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग जो मैं बोलने वाला है उससे कम कॉस्ट में काम हो जाते हैं, वो एक फायदा है, और पेपर पेन सिस्टम से भी थोड़ा बढ़िया है, बस इतना है। लेकिन इसमें दोनों कॉमन है, जो मटेरियल्स चले जाते हैं ऑटोक्लेव से या वॉशिंग सिस्टम से या पैकिंग सिस्टम से, ये सारे के सारे रजिस्टर में एंट्री करने का तो होते ही होते हैं, खाली इतना ही फर्क है कि उसमें आपका और टाइम का जो लेबल है वो लेबल लग जाएगा, ताकि इसमें थोड़ा सा ऑटोमेशन है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैकिंग सिस्टम। आप देखा रहेगा इंस्ट्रूमेंट्स का ऊपर वो कंपनी का नाम लिखा है और कंपनी का मतलब डिटेल्स दिखा है, उसके साथ साथ एनग्रेविंग हो जाते हैं इसका एक बारकोड, और ये बारकोड के साथ अपने को एक रीडर और स्कैनर रखना पड़ेगा वो बारकोड जनरेट करने का, और बारकोड स्कैनर रीडर रखना पड़ेगा एंड यूजर लेवल में। इसमें सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन उसमें से जो रिकॉर्ड निकल जाते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं, उसमें सब ऑटोमेटिकली डेट आता है, टाइम आता है, एंड ओटी में भी बैठ के उनको पता करते हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग एक ड्रामा इधर दिखाने वाले, उसमें मालूम पड़ेगा आपको क्या क्या डेली होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स, तो वो ऐसा फोन बार बार नहीं करना पड़ेगा आपको ओटी में बैठ के वो सिस्टर को देख सकते हैं या डॉक्टर को देख सकते हैं मेरा जो दिया हुआ सेट किधर तक पहुंच गया करके। और इसमें बहुत सारे फायदा है। सी पॉजिटिव्स आर स्टैंडर्ड कॉम्प्लायंस, ये होना चाहिए, मतलब कैसे होना चाहिए एज पर द गाइडलाइंस और बीइंग फॉलोड, और इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी दिखा जाते हैं सीएसएसटी का लेवल में, और एक्सट्रीमली एक्यूरेट रहता है, इसमें कोई मिस्टेक होने का सवाल ही नहीं है। जैसे सर ने पहले बोला था गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से काम कर रहे हैं तो इसमें ऑलमोस्ट 0 एरर हो सकते हैं। सो दिस इज ऑब्वियसली ए गुड सिस्टम एंड ट्रैक्स ऑल द प्रोसेस, मतलब ऐसा नहीं कि ऑटोक्लेव का प्रोसेस का अपने को रिपोर्ट मिल जाता है। नाउअडेज द वर्ल्ड इज फोकसिंग टुवर्ड्स वॉशिंग प्रोसेस, इफ इट इज नॉट क्लीन इट इज नॉट स्टेराइल। This is the equation going on nowadays, because sterilization process more or less सारे के सारे हॉस्पिटल में ऑटोमेशन आ गया है, लेकिन वॉशिंग प्रोसेस आज की तारीख में इवन सो कॉल्ड 5-स्टार हॉस्पिटल में भी ऑटोमेशन नहीं आया है। तो उसके लिए ये ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करेंगे तो थोड़ा तो आप लोग को ऑटोमेशन उसमें भी मिल जाते हैं, रिकॉर्ड बन सकते हैं, एंड कंपैटिबल ऑल टाइप ऑफ रिप्रोसेसिंग जो कुछ होते हैं उसके साथ ये सिस्टम हम लोग को यूज कर सकते हैं, और उसमें से फीडबैक भी मिलते हैं, कुछ कंप्लेंट है तो पता चलते हैं, यू कैन इवन डाल भी सकते हैं देखो ये इंस्ट्रूमेंट का रिपेयर का जरूरत है, देन दोस पीपल उसके साथ जो कनेक्टेड है उनको वो डाटा ले सकते हैं। कोई मैनेजर एक दिन बोलता है तुम्हारा इसका रिक्वेस्ट कितना आया है, ये फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव आइटम रहेगा, फॉर एग्जांपल दैट जैकब्सन नीडल होल्डर इट कॉस्ट 2 to 3 lakhs, सिंगल इंस्ट्रूमेंट कार्डियक में यूज होता है। तो इसका स्कैनलाइन सेल एंड सॉरी आई एम जस्ट टेकिंग अ कंपनीज नेम व्हिच वी कॉमनली यूज और सम अदर कंपनी व्हिचएवर, तो वी डॉक्टर इज रिकमेंडेड दिस,
तो क्यों लेना चाहिए, तो उसका हम लोग बता सकते हैं। देखो जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट सो कॉल्ड कंपनी से लिया था, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम उसको भेजना पड़ा, वो भी रिटर्न किया, उसको यूज फायदा नहीं है रिपेयर करके, खाली आप मेरे को पैसा देते रहेगा और मैं कमाते रहेगा, लेकिन तीसरे दिन आप मेरे को वापस देते रहेगा, ऐसा हो जाते हैं तो डिस्कार्ड करके क्या फायदा है। ये सब डाटा ये सिस्टम यूज करेगा तो मिल जाते हैं। एंड इसमें खुद एक सेल्फ ऑडिटिंग कर सकते हैं, अपने को दूसरा बाहर से कोई ऑडिटर को बुलाने का जरूरत नहीं है, ये सिस्टम इटसेल्फ इज एन ऑडिट सिस्टम। एंड लिटिल और नो इसमें हैंड राइटिंग है, तो वो डॉक्टर का राइटिंग सब नहीं आएगा, इसमें टेक्नीशियन डॉक्टर नहीं बनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली हम लोग जैसे कंप्यूटर में फीडिंग करते हैं ऐसा ऑटोमेटिकली स्कैनर से ले लेते हैं, तो दैट इज advantage. So it's very easy system, and that also you don't have to do any physical exercise, no time wasting, and maximum utilization of the resources इसमें automatically हो जाते हैं। इसमें नेगेटिव पॉइंट है तो ऑब्वियसली कॉस्ट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो मैनेजमेंट को समझाना पड़ेगा। एंड यू नीड टू दिस हैव ए प्लान बी सिस्टम, मतलब ये कोई भी कारण से बाई चांस वो नहीं चला है, टू मेक द कंटिन्यूटी of the system you may have to have a some plan B system, और मैन्युफैक्चरर को बोल के हम लोग करना चाहिए। Now without wasting much time I will just speed से मैं ये इसका सर्जिट्रेस का थोड़ा इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। ये सर्जिट्रेस का ये ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन बराबर दिखते हैं। आई एम टेलिंग अगेन, उनका एक स्टॉल खोला हुआ है आइका का, द पीपल जेंटलमैन आर सिटिंग हियर एंड दे विल एबल टू प्लीज गेट अप। So these people are there. In your break, please meet them. There they see which the yeah, please sit. So with the very shortage of time over here, I want to talk much about it because it's a benchmark. With my own experience, I realized, I had a lot of talk with this gentleman, and now I realized that this system works very well, and they are supporting us also for this conference, and I'm very happy they are here, and you got a golden opportunity to meet them and understand how this system will work with the workflow of CSST. तो हर एक स्टेजेस में वो डाटा को कैचिंग करते हैं, एंड देन it will give us a compliance feedback of this, and इसमें कोई manual error होने का chance नहीं है। and next we'll go to this में तीन चीज मैं बोलना चाहता हूँ with the limited time I got over here। accountability and traceability इसमें मिल जाते हैं, जो मतलब अपने CSST का इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस कोई भी हॉस्पिटल में देखेगा तो एवरीबॉडीज ड्यूटी बट नोबडीज रिस्पांसिबिलिटी हो जाते था। नाउ CSST वॉलंटरली कैन टेक द रिस्पांसिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम, दैट ये हमारे पास है, हमको कुछ एक्स्ट्रा मैन पावर का जरूरत नहीं है, हमको कुछ एक्स्ट्रा टाइम का भी जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, ओनली वन इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट द सिस्टम सो दैट यू कैन गो अहेड एंड गेटिंग द रिजल्ट्स बाय डिफॉल्ट at even the director's table, because it is connected through the HIS system. So ये जो हो रहे हम लोग जो स्कैन करते रहते हैं हर एक एरिया में वो पता चलते हैं। And similarly doctors, see doctor sitting in the clinic, if it is connected through the remote, I mean mobile system, then he can visualize from his clinic when the set will be ready and when can I start my surgery, when what all things have been gone by that. Even the implants, orthopedic surgery में implants that has been brought, what all the implants are brought, no idea. So that sister phone करते हैं, बंदा लेके आते हैं, सर्जरी के बीच में पता चलते हैं अरे ये आइटम नहीं लाया है, then they have to adjust the surgery accordingly. What a crime we are doing. But if this system is in place, he will very well understand even before surgery sitting in his clinic that whatever materials required to be there along with the instruments names are available in the hospital. It is in the process. Now it is the sterilization last phase is going on. Next 20 to 30 minutes it will be in the operation theater table. So within 30 minutes I have to understand how much is the traffic in that area. I have to be inside the OT. That much facility is available. Next is usage and maintenance and repair. So as I told you earlier, instruments repair के लिए जाते हैं, उसके record आ जाते हैं, instruments condemnation होते हैं, instrument नया purchase करने के लिए you have to give the justification, even those all the data it will give and maintain adherence to regulatory requirements. For example, in the United States, this is made in the United States, so उन लोग उनके तरफ से लिखा है. So those whatever the data, I mean maintenance that requirement
that what is required, like there are norms and conditions and all for this thing, CSST to exist. All these are fulfilling or not. So these are the advantages. This slide also talking the same way. I'm just going ahead. So this is the details of that company. The telephone number is given. You can take the photograph. The gentlemen are here. They will show. Because of the shortage of time, I were not able to complete. But I hope I have spoken as much as important parts here with your permission. Thank you. And thanks for you for bringing me on this, guys. Thank you, sir. So अभी आप सबको पता है कि इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट्री कितना ज़रूरी है. So would like to thank ICA for bringing this topic for discussion. To felicitate sir, would like Captain Baban Rai sir to kindly come up on the dais to felicitate Mr. Murlikrishnan Nair sir. Can we have a round applause? Kindly wait.